गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एसपी क्लासेस रा आपन स्वागत मो वॉइस समस्त सुबुची एनीबॉडी वॉइस क्लियर हैला समस्त को जने राइजर हैंड करो अच्छा ओके स्टार्ट करबो सो काले में 46 नंबर क्वेश्चन बेलको मोर एटा स्टॉप हे जेतला वीडियोटी आ सो ता परठरो हमें नेक्स्ट स्टेप देखिबा ओके देखो मो तुम जोटा यूथ पब्लिकेशन रो क्वेश्चन डिस्कशन करियर मीनिंग हैला सो तुम कोथ पे प्रिपरेशन करछो मे बी डिप्लोमा लेवल हो कि आईटीआई लेवल हो मो रेगुलरली 5-6 जन को देखुची जो 5-6 जन आछो कनेक्टिविटी रहिले डिप्लोमा लेवल रो मते क्लास स्टार्टेड भी करी जो मन डिप्लोमा पे प्रिपरेशन करूछो सो दैट जदि आईटीआई पे प्रिपरेशन करूछो एमती ऑनलाइन में भी क्लासेस चाहबो और जो चाहे पर्सनली बुझिया पई जदि पर्सनली तुमको टाइम दवा पई ताले गोटे ग्रुप रे 5 जन रहइबो 5 जन रहिले पर्सनली देखबे एमती मते पर्सनली पिला भी होउछथि करछथि एबे ओएमसी रो गोटे पिलेट पाइथबो ग्रुप रे देखिथिबो एक्चुअली पाउछथि भी निजे प्रिपरेशन रो कंटिन्यू टू रखो इजीली किसी डरिवार नै ओके मानी मानी पढ़ा पढ़ी चलची ओके काउ तो वॉइस तो सुबियोनी समस्त ये सब नोरे चैटिंग रे कहबो ओके हाउ चलो स्टार्ट करबा हमें लेट करबा नै 46 देसी स्ट्रे लॉसेस आर कॉज ड्यू टू इनडस सो स्ट्रेस लॉसेस कोथ पे आसे स्ट्रे लॉसेस हमर लीकेज करंट हैला स्ट्रे लॉसेस आसे ऑलवेज मन रखितो लीकेज करंट जेमिति कि हमर लीकेज फ्लक्स रहउची और लीकेज फ्लक्स तो हमें लीकेज करंट मध्ये कहउची लीकेज करंट केतेबेले कोहा हबो जेतले हमर सर्किट केस आसीबो मैग्नेट डिफरेंट टाइप सर्किट अछि जदि हमर मैग्नेटिक सर्किट आसिला ताले आको हम कोन कहजे फ्लक्स कहबा जदि हमर इलेक्ट्रिक सर्किट आसीबो ताले हम कोन कहबा करंट कहबा सो फ्लक्स और करंट में जानि पले डिफरेंस कोन सो स्ट्रे लॉसेस आर कॉज्ड ड्यू टू एनी लीकेज फ्लक्स स्ट्रे लॉसेस को कारण हुए लीकेज फ्लक्स जुगुरु हुए and stray losses is the sum of mechanical losses and iron losses out point मन रखियो stray losses का मेकानिकल लॉसेस और आयरन लॉसेस रो मिश्रण ही आसे सो स्ट्रे लॉसेस कोन द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस ड्यू टू मूविंग ऑफ अ बेयरिंग शाफ्ट एंड विंडेज लॉसेस ड्यू टू एयर गैप इज कॉल्ड एज द स्ट्रेस लॉसेस देखो हमें सब जानिले स्ट्रे लॉसेस रे कोन ना मेकानिकल लॉसेस एंड आयरन लॉसेस ऑफ मिसी सम ऑफ मेकानिकल लॉसेस और आयरन लॉसेस मिसी रछि अतः आयरन लॉसेस हमें जानि छे नो डाउट बट मेकानिकल लॉसेस कोन ना मेकानिकल लॉसेस रे हमर फ्रिक्शन लॉसेस रहिছে ओके कोन रहिছে फ्रिक्शन रहिছে आउ कोन रहिছে प्लस विंडेज रहिছে विंडेज सो विंडेज कोन फ्रिक्शन कोन जेतले हमें कोनोसी बेयरिंग लगाउछे बा शाफ्ट रहছে से समय कोन हमर फ्रिक्शन रहছে बेयरिंग टा कोड लगाउछे शाफ्ट फिर लागुचे से तमे फ्रिक्शन लॉसेस सेट क्रिएट हबो आ विंडेज लॉसेस ना जेतले हमर एयर गैप रहबो से गैप भीतर गोटे लॉसेस क्रिएट करे से गैप तो हम कोन कहछो विंडेज लॉसेस बोली कहछे विंडेज लॉसेस ड्यू टू कहा जुगर घटे एयर गैप जुगर मध घटे मन रखितबो बेले बेले क्वेश्चन जदि डिफॉर्मेट बुले देला ड्यू टू एयर गैप इन ताले को लॉसेस क्रिएट हबो विंडेज लॉसेस क्रिएट हबो आ अदर लॉसेस केबे मारिबो नहीं okay next question को जिबा by which effect electric current both generator and motor are working को effect रे obviously magnetic जे तो formation होची magnetic effect so magnetic effect electric current both generator and motor are working okay को effect रे magnetic effect रे an electric motor is a device that converts mechanical electrical energy into mechanical समस्त जानि छ motor वाला कोन electrical to mechanical convert करबो और जनरेटर कोन कन्वर्ट करबो इज द मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करबो आ किछि नो जिंस नै केवल ए गोटे इंपोर्टेंट मैग्नेटिक इफेक्ट रे ही रन अप करे सो बेयरिंग इज यूज्ड हमें बेयरिंग कोन पई व्यवहार करू छै हमें बेयरिंग व्यवहार कर छै सपोर्ट एंड होल्ड द शाफ्ट फिक्स पोजीशन यस या पई मद व्यवहार कर छै allow the shaft to run in freely yes run free रे मूव करिया पई मद बेयरिंग व्यवहार कराउ छै and minimize the rubbing of action yes बहुत rubbing that means सब जो घर्षण है कि जो रफनेस पळे आसे से रफनेस ता बहुत कम आसियो जदि बेयरिंग थाए सो ऑल ऑफ द मेंशन आर बीन करेक्ट ओके सो आउट कोन रखे पड़िया टू रिड्यूस द फ्रिक्शन लॉसेस आउट कोन हला पॉइंट मन रखतुवा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ लॉसेस
सो इन डीसी मशीन में कौन करा जाता है बॉल बेरिंग और रूलर बेरिंग होता है डीसी मशीन में कौन होता है ना बॉल बेरिंग एंड रूलर बेरिंग होता है मन रखिथिबो क्वेश्चन उरा वेरी वेरी इंपोर्टेंट डीसी मशीन रे हमर को बेरिंग होता है बॉल बेरिंग हेतबो नहले हमर रोलर बेरिंग हेतबो ओके पिले मन देखो या पर मु आरके राजपूत रो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बदे मु आणुची बहुत शीघ्र आछे विथ पब्लिकेशन रो हमर गोटे दुटा चैप्टर कंप्लीट होला पारे देन मु आरके राजपूत रो क्वेश्चन भी मदे गडेबी ता सते बीके मेथर मदे सॉल्यूशन भी करेबी नो डाउट आउ ता सते अपडेट रे तमे रहयार अछि एते बेसी कोनसे 15 टा 20 टा बुक रु पढियार आवश्यकता नाही ओनली वन ऑफ द गोटे बुक को फोकस करो आ भरसे कांसेप्ट से तो बुझो तुम कांसेप्ट वंस क्लियर हो गेले ना सब एग्जाम क्लियर हो जिवो ओके नेक्स्ट पॉइंट को जिमा नेक्स्ट हला हाउ कैन compensate for a demagnetizing effect of a low induced EMF in a large machine. So demagnetizing effect of low this कोन how can compensate केमिति हमें compensate करिबा demagnetizing effect of a low induced EMF in a large machine बड़ बड़ machine रे हमें केमिति demagnetizing effect को कमेइबा okay so to provide the compensating winding in a series with armature na increase the ampere turn with the field of the windings na another point is the kona providing the compensating winding in parallel with armature na reducing the ampere turn in a field winding हमें सदाळे मन रखते compensated winding ना हमर कौतर कनेक्टेड होची सीरीज रे कनेक्टेड होची का सहित कनेक्टेड होची ना आर्मेचर सहित कनेक्टेड होची कोन पे कनेक्टेड होची to minimize the demagnetizing of the effect demagnetizing effect को minimize करिया पई बा लो करिया पई हमें कोन यूज करछे compensating winding यूज करछे always remember that is very very important points okay बेले बेले इंटरव्यू रे मते क्वेश्चन पचरा देता है and how to minimize the demagnetizing effect by the uses of a compensating winding so compensating winding कोन पे हम यूज करछे because that to remove in a demagnetizing effect आउ कोन हे परिबो देखो इंटरपोल मधे हम यूज करछे इंटरपोल रो मधे हम करछे ओके जो मेन पोल मझे जो इंटरपोल दिया जाता है से इंटरपोल रीजन रे कोन रहते ब्रश रहते इंटरपोलर रीजन लास्ट क्लास में तुम पढ़े थिबे लास्ट क्लास जो ने अटेंड करथो जानि थिबो ओके आर्मेचर रिएक्शन कोन आर्मेचर रिएक्शन को मधे रिमूव कर दे द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स टू द मेन फील्ड फ्लक्स इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन विषय कोन ते जानि दिथवा देखो इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स जदि कोनोसी आर्मेचर ऊपर जो फ्लक्स क्रिएट करे एंड द मेन फील्ड फ्लक्स क्रिएट करे देखो हमें तो एटा तो हला हमर जनरेटर हो कि मोटर हो ता भीतर हमर कोन छै आर्मेचर रहै छै सो आंक भीतर मते जेहेतु ओटे फील्ड रहै छै ना नै ई फील्ड क्रिएट करबो काइना चारटा मेन पोल सेतरा आ चारटा कर दे इंटरपोल तो सो आंक भीतर ओटे फील्ड फ्लक्स क्रिएट करबो ओके जेतरा आंक भीतर ओटे फ्लक्स क्रिएट करबो सो आर्मेचर रे मते ओटे फ्लक्स क्रिएट करबो जो आर्मेचर फ्लक्स आ या भीतर दीटा जो फ्लक्स होय छै सो आर्मेचर फ्लक्स कोन कहू छै the effect of armature flux on main field flux रू जो इफेक्ट लिए आसी के पड़िबो कहा पर आर्मेचर फील्ड फ्लक्स ऊपर ताकू कहा जीवा आर्मेचर ऑफ रिएक्शन ओके सो फ्लक्स ता क्रिएट हो कहा रो ना मेन रो बट तार इफेक्ट ता कहा पर पड़िबो आर्मेचर रिएक्शन ऊपर पड़िबो दैट नेम इज आर्मेचर ऊपर पड़े तेपे कहा होची आर्मेचर ऑफ रिएक्शन ओके सो वेरी सिंपली लिखा है द इफेक्ट आर्मेचर ऑफ फ्लक्स on the main field flux is known as a armature of a reaction. In order to reduce the effect, a armature reaction को effect को हमें कमे पे कौन यूज करी परिबा ना high reluctance of a pole pole tips जो हम पोल लगाउछे सो हम पोल यूज कराउछे कोन नॉर्थ पोल साउथ पोल यूज कराउछे ना नहीं सो द पोल अच्छे हाई टिप से यूज करे पड़ियो पोल टिप रे कोन द पड़िबो हाई रिलक्टेंस रखिया जरूरी एंड बाय द इंक्रीजिंग ऑफ रिलक्टेंस so increasing of reluctance in the armature of a flux so कोन हबो ना जतोले by increasing the reluctance in the armature of a flux आ कोन हे परिबो ना strong main field flux न दे परिबो आ कोन हे interpole and compensated winding so armature reaction रो आहुर मते ओटे हे परिबो compensating winding कले हमें जो इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट पड़छि ए मेथड मारे व्यवहार करि परिबा ओके केमिति व्यवहार करिया जानि पहिला जो हमें इफेक्ट रिड्यूस होची आर्मेचर रिएक्शन जो इफेक्ट रिड्यूस केमिति करि परिबा हमें पोल टिप मध्ये यूज करि परिबा
पोल टाइप रे किंतु हाई रिलक्टेंस रहिया जरूरी आ कोन हेबा जरूरी ना इंक्रीजिंग इन रिलक्टेंस जदी रिलक्टेंस को हमें बढ़ाउछे देन आर्मेचर फ्लक्स आल्सो बी रिमूव हो जिवो बा आर्मेचर रिएक्शन आल्सो बी मिनिमाइज हो जिवो एंड स्ट्रांग मेन फील्ड फ्लक्स जदी मेन फील्ड फ्लक्स ता जदी हमें स्ट्रांग दबा ताहले हम आर्मेचर को जो रिएक्शन हबो दैट इज द सी मदे मिनिमाइजेशन भी हे दे पारे देन आउ कोन हे पारे इंटरपोल भी हे पारे आउ कोन हे पारे कॉम्पेंसेटेड वाइंडिंग हे पारे एबे जानि पाइला कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल इसो कोन पे व्यवहार कराउची टू रिमूव द आर्मेचर ऑफ रिएक्शन आर्मेचर रिएक्शन को हमें मिनिमाइजेशन करिया पे व्यवहार कराउची ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ इन ए फोर पोल ऑफ डीसी जनरेटर हैविंग ए लैप वाइंडिंग देखो ये नंबर ऑफ आर्मेचर ऑफ पैरेलल पाथ पचारची दैट मींस ए थिला पैरेलल पाथ तो पी थिला पी तुम कहइथिली जदि लैप रे कोन थिबो पोल जतिकी पैरेलल पाथ मध्य सेतिकी से देइछि केते 4 पोल दे जे डाकिकन मोजी की 4 पोल लिखिबो ओके सो वेरी सिंपल आउट विषय जानिया लैप वाइंडिंग कोन ना लैप वाइंडिंग इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ लैप वाइंडिंग इज द number of parallel path is equal to the total number of poles so poles parallel path जतिकी रहउछि पोल मध्य सेतिकी रहइबो कोथ रहइबो लैप वाइंडिंग रहइबो and the number of brushes is equal to the number of parallel path it is very important question number of brushes it the very important exam रे पकेतिला UPTCL exam रे the number of brushes is equal to the number of parallel path जेतुटा थिबो number of कोन त ब्रशेस मध्य सेतुटा थिबो that means जदि मोर 4 पोल रे रहउची चारिटा पोल रहउची ताले मोर ब्रशेस पैरेलल पाथ केतेटा रहबो चारिटा रहबो देन मोर ब्रशेस आल्सो बी केतेटा रहबो चारिटा द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ नंबर ऑफ ब्रशेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ रे जेतुटा रहबो सेतुटा बट वेव वाइंडिंग रे कोन नो वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रे केते 2 रहउची द नंबर ऑफ ब्रशेस केते रहबो 2 रहबो सो ए पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट ओके आपको एग्जाम पॉइंट रे लॉजिक क्वेश्चन आसीबो एग्जाम रे आपको आसीबो नो डाउट so the field coil of a DC generator are usually made of समस्त आंसर coil देच माने कोते तयारी हेतिबो कॉपर मेटेरियल तयारी हेतिबो and the field coil of a DC generator as usually made of कोते तयारी छै ना कॉपर रे तयारी थाए and field coil of a DC generator or motor usually made of copper हमें जानि छै मोटर हो कि से जनरेटर हो तार फील्ड कॉइल कोते तयारी हो कॉपर रे तयारी बिकॉज़ काहे की because it's a good of electrical conductivity so good electrical conductivity so and good thermal conductivity अच्छा सिल्वर आइडा त हमें कॉपर सिल्वर हे परिबो गोल्ड हे परिबो काहे हमें सिल्वर और गोल्ड नहीं पारने बिकॉज़ दैट इज ड्यूट इन हाई कॉस्ट ऑफ रीजन सो अधिक कॉस्ट रथरो सेडा हमें ताको कंसीडरेबल को करा जाय नाही सेते कॉपर इज ए गुड इलेक्ट्रिसिटी रो गुड कंडक्टिविटी सेते ताको हमें यूज करूचे ओके एंड अल्टीमेट थर्मल कंडक्टिविटी कोन जानि छ जेतले गरम हो जाय कॉइल का दैट मोमेंट थर्मल इफेक्ट विल बी क्रिएटेड है ओके से थर्मल रे देते एते शीघ्र गरम होबनी कि एते शीघ्र नष्ट भी होबनी कॉइल कॉपर कॉइल तो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा य कोड देछि एक विषय कोन जानिबा य इज ए स्मॉल डीसी मशीन हम समझ जानि एक is a small DC machine and it is made in a cast iron not any cast this one is cast iron but in case of a large machine is made in a cast steel not in cast steel and rolled up the steel so armature core कोन armature core is made of a silicon steel why silicon steel कोन पे व्यवहार करछे because that to minimization of hysteresis losses and pole shoes कोन pole shoes is made in a steel so pole shoes टा कोथरे द स्टील रे तयारी थाए जदी मोर स्टील मटेरियल केतळ हेतिबो ना त लार्ज साइज हेतिबो बा हमर रोल स्टील हेतिबो आ जतळ हम स्मॉल साइज हेतिबो कास्ट आयरन हेतिबो बट द पोल शूज इज लैमिनेटेड किंतु पोल शूज टा सदा बेले कोन हेतिबो लैमिनेटेड हेतिबो पोल कोर एंड पोल शूज सो दीटा को बहुत इंपोर्टेंट रोल थाए जनरेटर में एंड कम्यूटेटर कोन थाए ना इट इज मेड इन ए हाइड्रोन कपर आपको कोते देरते हाइड्रोन कपर हेतिबो आउट मन पिला ने मन रखतो जेतले पोल शूज टा हमें काहे की दे देछि ना जेतले फ्लक्स टा हमरा फॉर्मेशन होबो ना मैग्नेटिक फील्ड भीतर ते फ्लक्स टा फॉर्मेशन होबो एटा पोल शूज थाए तो परफेक्टली यूनिफॉर्मली हमरा फॉर्मेशन होबो से पे हम मदे पोल शूज को दे देथाय एंड इट इज मेड इन
हाइड्रोजन कपर कोडा हाइड्रोजन कपर तयारी थाए कम्यूटेटर को हाइड्रोजन कपर रे तयारी थाए सो पिले माने नेक्स्ट पॉइंट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हला फ्रॉम द गिवन ऑफ द बिलो सिंबल आइडेंटिफाई द स्पीड ऑफ द आसो सीरीज ऑफ वायरिंग सो हमें वायरिंग करछे वायरिंग समय रे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल दे देछे सो सिंबल एइते पय दे जाउछे ना हमें आ लेखि गेले तो कोन से जिंसटा वायरिंग रे परफेक्टली परिबोनी से तो हमें इलेक्ट्रिकल टा में साइन एंड सिंबल वाली पाठ पढ़छे सो आको मिते से कोन पचारछे ए जो सिंबल टा देछे एटा कहार वेरी सिंपल जी देइछि माने आ तळे कोन देइछि डीसी दे देइछि आ बाकी कोन दे जनरेटर मानियो ओके the given of the symbol is to a generator okay ako ko generator dc generator बोले हमें कहबा बुझि पाइला नेक्स्ट पॉइंट को जा आपको देखिया दरकार नै डीसी जनरेटर कोन गोटो हो हमर सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर आउट हो हमर सेल्फ एडा हमर कोन सेल्फ एक्साइटेड जे त हमर पछरे ओटे डीसी सोर्स दिया जाई छी एडा हमर सेपरेटली एक्साइटेड ऑफ डीसी जनरेटर okay next point को जिबा what is the function of a split rings in a dc generator गोटे डीसी जनरेटर स्प्लिट रिंग्स मु वेरी सिंपल बजे स्प्लिट रिंग्स रो अदर नेम कोन कम्यूटेटर लास्ट क्लास रे मु तुमको कहितली कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग रो अन्य ना हला कम्यूटेटर ता काम कोन जनरेट द आउटपुट जनरेट करबो यूनिडायरेक्शनली वेरी सिंपल वेरी इंपोर्टेंट जिंस सो कोन एटा यूनिडायरेक्शनली के बाहर करबो ना हमर कम्यूटेटर बाहर करबो ओके सो यूनिडायरेक्शनली so split rings are also known as a commutator split rings को हमें other word कौन कहउछे commutator बोली कहउछे and the function of a split rings कोन function of a split rings हला और commutator हला dc generator कोन हबा generate the output unidirectionally सदा मन रखियो कोन एटा आसीबो output unidirectionally आसीबो and it convert bidirectionally तापर unidirectional रो से convert करबो bidirectionally अच्छा पिले माने इन जनरेट द कोन देछि जनरेटर जनरेट बाय द unidirectionally and it's converts bidirectional signal into a unidirectional so bidirectional signal कोडा AC and a unidirectional signal कोडा DC that means AC ला कोन ना आर्मेचर एटा रहबा आर्मेचर सो आर्मेचर सहित हम कोन कनेक्टेड रही छी कम्यूटेटर कनेक्टेड रही छी सो आर्मेचर जो आउटपुट दबा कोन दबा AC दबा ताहले कम्यूटेटर रो इनपुट कोन होबा एसी होबा ताहले कम्यूटेटर रो आउटपुट कोन दबा डीसी दबा ओके ऑलवेज रिमेंबर दैट एसी माने आर्मेचर जो करंट बाहर करबो सेटा के एसी आ इट इज मेड इन अ हाइड्रोजन कपर आकु कोथरे तयारी छी हाइड्रोजन कपर मेटल ले तयारी छी को मेटेरियल तयारी छी हाइड्रोजन कपर मेटल ले एंड इट इज मेड इन अ सेगमेंटेड ऑफ कपर आकु कोन हेते सेगमेंटेड कराय थाए कपर कोन सेगमेंटेड थाए ना कपर लॉक्स थाए से सेगमेंटेड हे थाए जो सेगमेंटेड है थाए से सेगमेंटर कोन लगता है को जॉइंट है थाए कम्यूटेटर राइजर से अटैचमेंट है थाए से सेगमेंटेड ओके एगो सेगमेंटेड वाली कहा जाता है एंड इज सेगमेंटेड और इंसुलेटेड विथ ए थिन लेयर ऑफ माइका सो प्रत्येक जो सेगमेंटेड है थाए ता भीतर कोन ओटे थिन लेयर ऑफ माइका दे देता है एंड द थिकनेस ऑफ माइका केते 0.35 टू 0.5 मन रखतिबो वेरी इंपोर्टेंट एटा आरके दासपुत्र क्वेश्चन सो ए जो पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इथरो बहुत किछि देखो क्वेश्चन पाई जीवो ओके सो ए क्वेश्चन रे टिके भला भाबरे ओवरलुक करा ओके very important okay so that the number of a commutator segment is equal to the number of a coil in the armature it acts as a mechanical rectifier so the the commutator segment is equal to the number of a coil of armature se कहउचे that the commutator segment जतुडा रहबो number of a coil in the armature सेतुडा रहबो जदे मोर तार थिकनेस केते रहबो ना 0.35 टू 0.50 रहबो ओके so that next point of kujiba it act as a mechanical rectifier rectifier तुम कहउचे कोन बेटा rectifier से मोटर कोन है जो mechanical inverter रह जिवो okay so what is the cause next question what is the cause of a heavy sparking in the brush of a DC generator जदि गोटे डीसी जनरेटर ब्रश पाखरे गोटे हेवी स्पार्किंग होची तार कारण को होई पारे शॉर्ट सर्किट द फील्ड वाइंडिंग ना शॉर्ट सर्किट द आर्मेचर वाइंडिंग ना चेंज इन पोजीशन ऑफ एमएनए दैट इज द करेक्ट आंसर चेंज पोजीशन ऑफ इन एमएनए जदि एमएनए और जीएनए पोजीशन रो थिबो माने कोन थिबो
करेक्ट पोजीशन नथिबो ताहले हमर कोन होबा निश्चित भाव रे से स्पार्किंग होबो ओके सो पहले माने जदि तमे डिटेल्स थ्योरी विषय जानियो चाहबो ताले मु निमिर थ्योरी पढेइबी ऑनलाइन क्लासेस रे जा फलर कि मॉर्निंग रे जेमति हमें पढुचे फर्स्ट मॉड्यूल सो ओवरऑल फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हे गला पका पके ही आसला बरे मु सेकंड ईयर रो गोटे स्टार्टअप करेबी बिकॉज़ दैट हमर 12 टा मॉड्यूल अछि सो मो टारगेट अप करिछि मॉड्यूल जोडे कि सेमिस्टर 3 100 डेज रे कंप्लीटेशन करिया पाए एंड आल्सो सेमिस्टर 1 को 120 डेज रे कंप्लीट करिया पाए सो आज वेल एज साइमल्टेनियसली रिटर्न चलिबो देन मोर एटा 30 टा 40 टा क्लास सही गला पारे देन मो फोर्थ एंड सेकंड सेमिस्टर आगो पछे की कंप्लीट करे जेहेतु हमर एग्जाम या भितरे एई मंथ रे ओपीडी सेल भी सुनिया पाउची जोडा कि 7-8 दिन भितरे ओपीडी सेल भी आउट होबार भी अछि मे भी जदि ओपीडी सेल आउट हे गला बी सीरियस आ तमनु केवल मो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गढेइबी आ ऑब्जेक्टिव ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कशन करेइबी से डिस्कशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जेमति वर्तमान आपण ने डिस्कशन सुनुछ ओके तो नेक्स्ट पॉइंट को जीवा so that aku kaun korche change in the position of a MNA so the cause of a heavy sparking is the process of a decision maker due to change in a position in a MNA position को change करे पे हमें यूज करू then sparking at the process in a DC machine is due to a reactance of a voltage कोत कारण हुए reactance of a voltage जुगुर हुए and the effect of a reactance voltage is caused the sparking of a heating of the trailing burst tip TPT trailing pool जानिथिबो TPT okay trailing pool tips okay जो trailing burst tip हुए and temperature rise of the commutator surface so temperature दा सदा कोड राइज करबो commutator surface रे आ स्पार्किंग दा सदा कोड करबो TPT रे trailing pool tip रे होबा बा trailing burst tip रे होबा and the effect of react कोत कारण हुए ना reactance voltage गुरु हुए को कारण हुए reactance voltage गुरु हुए sparking okay the sparking of burst in a DC machine is due to a reactance of voltage मन रखिथियो को voltage a reactance voltage very very important okay the armature core of a DC generator is made in armature core टा कोथरे तैयारी थे silicon steel ले तैयारी थे कौन पे तैयारी थे ना hysteresis losses minimization करे पे by the adding of a केते percent 2 to 5% of a silicon steel reduce the conductivity of a and increase the resistance of a material ताले कंडक्टिविटी कमे दबो रेजिस्टेंस हमर कोन हबो बढ़ाई दबो कोन लगैले ना सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन जदि हमें करिया केते परसेंट ना 2 ରୁ 5% हम सिलिकॉन स्टील यूज कराउछ due to which will be reduce the eddy current losses without affecting the magnetic of current को कारण due to eddy current eddy which will be reduce the eddy current losses without affecting of magnetic of properties जा फल कि आमे जदि को सिलिकॉन स्टील करेबा हिस्टोसिस सिलिकॉन स्टील जदि व्यवहार करछे हिस्टोसिस लॉसेस यूज करछी आ ताको जदि आमे प्रॉपर्ली आमे स्टैम्पिंग बार लैमिनेशन करूछे ताले हमर एडी करंट लॉसेस मोते मिनिमाइजेशन होछ so it is also has a low hysteresis of coefficient will go to low hysteresis coefficient and hence hysteresis losses also minimize the hysteresis losses minimize okay so hysteresis losses kon by minimize haba because that hysteresis of a coefficient is very low okay so next question dekhiba the equation of a DC long son of a generator compound generator the long son compound generator the equation पचाछि कोन हबो देखो तमा आको भितर क्वेश्चन देखो देबा जानि परिबो सो बिटवीन आईआर एटा तो हबोनी इजिकल बिटवीन आईआर ये भी हबोनी मु तुम खाली पढैतिले कंपाउंड देछ ने वोल्टेज ड्रॉप दैछि एटे कोड वोल्टेज ड्रॉप ओड दैते यस v ब्रॉस कोड लगा जे गुटी जगह रे लिखा है आ को लिखा है ना सो सी इज करेक्ट आंसर ओके सो मन रखथिबो IA इक्वल ISS लास्ट क्लास रे मु कहितली कोन IA इज इक्वल टू IL इज इक्वल टू ISC एटा कोथरे कंपाउंड रे cumulative compound एट रे लॉन्ग सेंटर कोन हबो सो IA is equal to ISS plus IL मन रखतो आई शॉन्ट फील्ड और लोड फील्ड दिटा एडिंग हे जिवो इक्वल केते रहबो आर्मेचर करंट शॉन्ट रो करंट आ शॉन्ट फील्ड रो करंट और लोड करंट और फील्ड करंट एडिंग कला पर इक्वल हे जो आर्मेचर करंट सतो हला नेक्स्ट शॉर्ट शॉन्ट रे सेम देखा IA इज इक्वल ISS प्लस ISC सेम थी शॉर्ट रे एटा मु ऐड करतले एटा लॉन्ग शॉर्ट शॉन्ट हला सीरीज शॉर्ट शॉन्ट कोन एटा सीरीज
लॉन्ग सेटा कोन हबो हमर लॉन्ग सेटा हमर पैरेलल हे एसएच ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द आर्मेचर रिएक्शन ऑन ए अनसैचुरेटेड ऑफ ए डीसी मशीन जदि गोटे डीसी मशीन रे अनसैचुरेटेड हबो सैचुरेटेड रहबे कोन हबो क्रॉस मैग्नेटिज्म हेतबो ब्रश आर्मेचर रिएक्शन केतेबेला हबो ना जेतेबेला एमएनए पोजीशन टा चेंज हे जेतिबो ओके सेतेबेला मते अनसैचुरेटेड हे जिवो दिस आर्मेचर रिएक्शन इज unsaturated डीसी मशीन is a cross magnetism कोत पे ना क्रॉस मैग्नेटाइजेशन जुगुल हेता है before the saturation of a main field poles before the saturation of a kahar main field poles there is only cross magnetism of a fate তাহলে আমার স্যাচুরেশন পূর্বর কোন হইতো ক্রস ম্যাগনেটিজম ইফেক্ট তো এমএনএ পজিশনে জানিছ তো এমএনএ জিএনএ পজিশনটা এটা হলো আমার কোন জিএনএ ওকে আর এটা হলো আমার সরি এটা হলো আমার কোন এমএনএ ওকে সো just minute ओके देखो एडा हला हमर को पोजीशन हबो जीएनए एडा को पोजीशन हबो एमएनए so this can before the saturation in main field flux saturation हबा पूर्वरु बा main field flux जतले saturation हबा पूर्वरु main field pole there is only cross magnetism केवल cross magnetism effect है of a armature reaction after the saturation there has a demagnetism saturation ପରେ କଣ ହୁଏ demagnetism ହୁଏ and cross magnetization effect both are observed saturation ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଇଥିବ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଥିବ କୌଣସି ରୂପେ unsaturated ହେଇ ନଥିବ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନେ after saturation ପରେ କଣ ହବ unbalance ହେଇଥାଏ ଦିଟା ପୋଜିशन ପଡେ cross magnetism ଆସିଥାଏ ନହେଲେ demagnetism system ଆସିଥାଏ ଏଟା cross magnetism ଆସିଲା ओके से पोजीशन टा चेंजेबल ହେଇଥାଏ so the armature core of a DC generator is laminated कोन पे laminated था reduce the eddy current losses मैं टिके ना कहथली reduce करिया पे सारा यूजेस आउर कराउची हिस्टोसिस में सिलिकॉन स्टील यूजेस कराउची तो आंखो द lamination of देखिए lamination armature divided into thin insulator of a layer और thin insulator layer यूज करा जाता है कोथरे जेतले lamination है which effectively reduce the path of eddy current जाफल कि eddy current easily reduce करि पारे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन सो गोटे हम डीसी मशीन रे वेव वाइंडिंग गोटे एम्प्लॉयड कराइस एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन कोन पई मु काली कहिथिले वेव वाइंडिंग हेतले कोन हबो हाई वोल्टेज हबो खोजो एटे कोडा हाई वोल्टेज ले करंट कोन हबो निश्चित कमी जो द बी इज करेक्ट आंसर the b is correct answer okay so high wave winding kono wave winding is used high voltage and a low current high voltage or low current पे व्यवहार करा जाउछि and in a wave winding the number of a parallel path is always in 2 eta very simple कहछि number of parallel path सदाळे 2 and wave winding is incompletely winding सदाळे मन रखिबो question exam रे पासे which winding is a completely winding which winding is incomplete winding मन रखथुवा incompletely winding हला हमर कोटा wave winding is the very important question very important and it is a mechanical unbalance और कोन यो मध्ये होछि mechanical unbalance मध्ये होछि mechanical unbalance and to make it balance a dummy coil is used so mechanical balance को balance condition आनिया पे हमें कोन यूज करछे डमी कॉइल यूज करछे very important points मन रखिथबो सो डमी कॉइल हमें कोट यूज करछे ना मैकेनिकल बैलेंस को जो अनबैलेंस को बैलेंस कंडीशन बने पे जो वेव वाइंडिंग रा में यूजेस करछे डमी कॉइल सो नंबर ऑफ प्रोसेस ऑलवेज इन केते रिक्वायर्ड इन 2 जेतु हमर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 रुछि सेमे लैप वाइंडिंग रे कोन लैप वाइंडिंग इज यूज्ड इन लो वोल्टेज एंड हाई करंट सो जतला हाई करंट हमर प्रोड्यूस करबा बा हाई करंट हमर दरकार से समय कोन यूज करबा लैप वाइंडिंग करबा आउट मन तो लैप वाइंडिंग एडा हमर पैरेलल रे हला पैरेलल काली कहथले एंड वेव वाइंडिंग हमर कोड थिबो वेव वाइंडिंग हमर सीरीज बोली कहै सीरीज ओके और लैप वाइंडिंग रो अदर नेम कोन कहै छै लैप वाइंडिंग अदर वर्ड साउंड बोली कहै छै so lap winding is used low voltage and a high current so number of process are equal to the number of a parallel path it number of process equal to kitaba number of a parallel path
and equalizer rings is used to stop the circulating current. So equalizer ring एटा OPTCL क्वेश्चन पिला माने equalizer ring को जगह यूज करा देता है लैब वाइंडिंग रे. So equalizer ring ए लैब वाइंडिंग रे एंड कोन डमी कॉइल कोड यूज करा देता है वेव वाइंडिंग रे. एई दीटा क्वेश्चन ही एग्जाम रे आसे. equalizer ring कोड व्यवहार करा जाउची ना हमर लैब वाइंडिंग रे व्यवहार करा जाउची. ଆଉ ଆମର ଡମି କଏଲ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ଆମର ୱେଭ ୱାଇଣ୍ଡିଂ ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି. ଡମି କଏଲ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା ମେକାନିକାଲ ଅନବାଲାନ୍ସ को ବାଲାନ୍ସ କରିବା कंडीशन को आनिया पे हमें डमी कॉइल व्यवहार करूचे. ओके एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखबा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोन देछि ए 4 पुल अप डायनामो हैज ए 600 ऑफ कंडक्टर. देखो 600 ऑफ कंडक्टर कह देला ना z इज इक्वल केते 600 पळे आसलेनी. ओके सो देन आ कोन देछि then total conductor run in a 1000 rpm eta rpm de dele dete 1000 and its lap wound and its flux pole is 0 flux kete de dela flux de dela हम 0.064 ताले एटा कोन वाइंडिंग एटा लैप वाइंडिंग ता माने p इक्वल केते आसीबो पैरेलल पाथ तो इक्वल आसीबो p इक्वल केते देछि ए 4 पोल देछि ता माने p इक्वल केते 4 पोल. से फाइंड आउट द इंड्यूस ईएमएफ दैट मींस अब कोन बाहर करबो इजी बाहर करबो. इजी कोन 5znp/60a. सो एथरे आउट क्वेश्चन एटा वेबर दे देछि आउ 10 टू पावर -3 करिवार आवश्यकता नाही. ऑलवेज इन कोथर नबा ओवर नेछि माने से ओवर ही नै जाइछि. देखला लास्ट वाला 640. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा the open circuit characteristic of a DC generator. So केते बार सरकार अछि open circuit characteristic of a DC generator कोन पे यूज करा देते हैं. सो तुमको उससे तीनटा कर दे गोटे अछि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक गोटे अछि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आउट अछि OCC ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक. ले परिबा क्लास अछि ले परिबा काट दे क्लास अछि OCC कोन ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जोडा हम यूज करछे कोइ पे यूज करछे no load saturation of a characteristic. Always remember that no load saturation of a characteristic बोले हम कहू कोन कहू ताको no load of a saturation of the characteristic. So open circuit no load saturation मन रखितबो very very important question. आ एग्जाम रे पॉइंट ऑफ व्यू रे एई थरा जदी जो माने OPTCL OSPC अटेंड करथबो एई क्वेश्चन टा 100% एक मार्क पाइलो बोली जानो जे भी पढुथबो आ मो सहित कंटिन्यूटी जे रखिथबो मो 100% श्योर चैलेंज दे कहूचे OPTCL आ OSPC रे टेक्निकल रे आउट ऑफ 150 रु 130 अबव रखिबो एंड आउट ऑफ 80 रु 70 अबव. जदि मोर कंटिन्यूटी सहित रहइबो आ जदि डिफरेंस बुक को डिफरेंस आइडियोलॉजी रे तमे धरिबो देन योर चॉइस. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा. नेक्स्ट एटा कोन देजे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से जानिबा इज आल्सो नोन एज ए मैग्नेटिक ओपन सर्किट को अदर रे कोन कह जाय मैग्नेटिक सर्किट कैरेक्टरिस्टिक बोली कह जाय कोन कह जाय मैग्नेटिक सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कह जाय आउ कोन कह जाय नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक मध्ये कह जाय नो लोड सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक. ओके so these characteristics show the relation between in generator generated EMF in a no load से कहा क्या कैरेक्टरिस्टिक तो शो करेबो नो लोड एंड वर्सेस कहा दे फील करे नो लोड ऑफ फील करे रो कैरेक्टरिस्टिक विषय रे शो अप करेबो. ओके so that at a given of a fixed speed that means of E0 versus field current E0 versus field currents. Okay okay so next point of देखिबा next point कोन दै छै next is our internal characteristic का कर रहे ना generating EMF है versus कहां में रहबो आर्मेचर ऑफ करंट आउ का से तबो the external characteristic कोन ना टर्मिनल वोल्टेज versus लोड करंट एई तीनटा मन रखथिबो मु कहू छी पिले माने 110% 110% को एथि गोटे क्वेश्चन आसीबो 110% ए कांसेप्ट बुझी जाओ जदि थ्योरी रे जानियो चाहछो कैरेक्टरिस्टिक रो कांसेप्ट मु बुझे देबी थ्योरी रे बहुत बढ़िया बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक थ्योरी क्लास कला को करबा. ओके
So the internal characteristic on the between on load of a generated EMF Eg and the armature of a current out kon hela armature of a current rahila. Okay. ପିଲେ ମାନେ ମୁଁ ମେସେଜ ଦେଖିନି ହଁ କେ ମାନି ବେହେରା ଓଏମସି ସାର୍ ହେଲାନି ଚଳିବ ସାର୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ମାନି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଏଚପିସି ଆଉ ଓଏଚପିସି ସବୁଠାରୁ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟେଡ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ହାଇ ପେଡ୍ ଅଫ୍ ସାଲେରୀ ଇନ୍ ଆଇଟି ରେଟେଡ ମନେ ରଖିଥିବ ଓଏଚପିସି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଏ ଆଉ ସବୁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାର ରୁହେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏରିଆ ଆଉ ୱାର୍କ ଲୋଡ ବି ବହୁତ କମ तार प्रमोशन ग्रेड भी बहुत भल एवरी 3 year to 3 year प्रमोशन भी रहे तो ओएसपीसी इज द बेस्ट जॉब फॉर एनी आईटीआई स्टूडेंट्स ओपीडीसीएल इज द बेस्ट आल्सो बिकॉज ओपीडीसीएल तमे अर्बन एरिया रे रहइबो सो ऑल ओवर ओडिसा सारा मूवेबल हे परिबो भी किंतु ओएसपीसी सम ऑफ केतुटा सातटा पर्टिकुलर एरिया को मूवेबल हे परिबो सो कोनोसी जॉब खराब नहीं तुमको डेडिकेटेड सहित क्रैक करियर अछि काहे ना गोटे ड्रीम जॉब समस्त रहे सो ड्रीम जॉब पाई गला परे देन नेवर आउ किछि दरकार नै सो कहार कोन चॉइस तुम निजे ही जानिथिबो सो आपण निजे पढो मानिने भलसे पढे मु ऑलवेज रिमेंबर तते मन रखिछि आ अछि भी किछि डरियर नै ओके सो एक्सटर्नल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कहा का मदर अब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हमर टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट भीतर हबो टर्मिनल वोल्टेज आउ लोड करंट भीतर हबो ओके सो टर्मिनल वोल्टेज आउ लोड करंट भीतर जे रिलेशन करे सेडा हला हमर एक्सटर्नल देखो एक्सटर्नल माने कोन देखो वेरी सिंपल रे मन रखितो केमति कहू देखो वेरी एडा कैरेक्टरिस्टिक ता बहुत इजी माने आमे भाबु जे कैरेक्टरिस्टिक होउनी तो केमिति कैरेक्टरिस्टिक मन रखियो म तुमको कहू देछि देखो फर्स्ट एडा ओडा आर्मेचर नेला आर्मेचर कोन लागि छै ना कार्बन ब्रश लागि छै आउ कोन लागि छै ना हमर एडा साउंड फील्ड ले आउ कोन रहला एडा हमर लोड रहबो ओके एडा कोन रहबो लोड रहबो बुझि पाइलो सो एडा लोड रहला माने लोड माने कोन हला एक्सटर्नल हे जेबो साउंड माने कोन इंटरनल हे जेबो सो आर्मेचर नो लोड याद रे किछ कोन लोड बुझि पाछो नै सो आको दे कोन दैछि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सो देखो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा रहते रहउछि ना टर्मिनल वोल्टेज है विथ लोड करंट आ टर्मिनल वोल्टेज सत रहबो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कहा रहबो ना आर्मेचर करंट आ जनरेटिंग ईएमएफ सो आर्मेचर करंट आ जनरेटिंग आर्मेचर या भीतर जो जनरेट करबो आर्मेचर करंट आ जनरेटिंग ईएमएफ बुझि परछो तो फील आर्मेचर करंट एंड जनरेटिंग ईएमएफ रे और रहला हमर जोडे कि नो लोड जोडे कि हमें कहउचे कोन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कहा का मदरे E0 एंड फील्ड करंट सो एडा हला फील्ड करंट एथे नो लोड हबो एथरा हम इंटरनली हबो एडा हबो हमर एक्सटर्नली मन रखथिबो लोड डा हमर कोन आसिला एक्सटर्नली आसिला ओके मझिडा कोन आसीबो इंटरनली भीतर रहउची इंटरनली सो जोडा फील्ड रहउची सेथे नो लोड जोडा कि हमें कहउचे E0 field current versus कार अब E0 no load voltage ओके जोटे कि लोड वोल्टेज पहुंची पारे नाही ओके नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिया the periphery of a distance between in a two side of a coil measure in a term of the number of armature of slots second this is co periphery of a distance between the two side distance two side हमें कोन कहउचे देखो ए क्वेश्चन डा एग्जाम रे अर्थ ओपीडीसीएल रे आसीथिला मन रखिथिबो पोल पीस फ्रंट पीस बैक पीच ना वाइंडिंग दमन फील्ड वाइंडिंग पीच रेजोनेंट पीच पोल पीच बैक पीच फ्रंट पीच इतर गोटे क्वेश्चन एक मार्क एठु देबी 100% एक मार्क देली कैरेक्टरिस्टिक रो 100% एक मार्क देली लैप वाइंडिंग वेब वाइंडिंग एक मार्क पाइबो तासे तो पुनी कहा को पाइबो हमरो पार्ट्स रे एक मार्क आल्सो भी पाइबो देखो एठु 5 मार्क ओपीडीसीएल 100% आसे कथा ही आसीबो the peripheral of a distance between two sides the distance between the side a coil measure in term of the number of armature slot between them is called as a coil pitch ta kon ka dim to coil pitch ka diyo so detale dita side distance between in two side distance between eta kon ka hoche
एटा को ए पोर्शन को हमें कोन कहबा बैक पिच बोली कहबा एटा कोन कहजिबो दिस वन इज ए बैक पिच आउ देतु सम सामना रे रहिছে ए दुटा कोन कहजिबो फ्रंट पिच कहजिबो कोन कहजिबो फ्रंट पिच आउ आंक मित्र जोडा रहला दैट इज अ रिजल्टेंट पिच ताके तो कोन कहजिबो रिजल्टेंट ऑफ पिच कहजिबो बुझि पाइलो से कोन देछि द प्रिफरेबल डिस्टेंस बिटवीन इन टू साइड दीटा कॉइल साइड एई पट साइड आ ए साइड कोन कहजिबो कॉइल पिच बोली कहजिबो ता कोन कहजिबो डिस्टेंस बिटवीन टू साइड ऑफ द कॉइल कॉइल रे एपट साइड गोटे डिस्टेंस आ एपट साइड ता कोन कॉइल पिच कहजिबो ओके नेक्स्ट बैक पिच कोन देला द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड वन कॉइल इज नोन एज टू साइड रो जोटा बैक पिच एटा को देखौतिले एटा कोन कहछे टू साइड रो ए गोटे साइड आरंभ कला ये गोटे साइड रो गुटिए कॉइल रो बुझि पाछो ना नै एटा हला गुटिए कॉइल रो ए पट रो एटा जोटे डिस्टेंस रहबो दैट इज आवर बैक पिच से लिखि कोन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड ऑफ वन कॉइल गुटिए कॉइल रो टू साइड रो एपट गोटे साइड रो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एज कोन बैक पिच ओके so that the front piece kon habo samna to samna joda rahibo the distance between of two coil connected to same commutator देखो देखो दीटा coil हेची commutator हेची ए गोटे commutator आरंभ हैला ये एंडेड हैला ये मझुरे आसी देछि सो आको मझुरे जोडा रहिला सेम commutator जोडा मझुरे रहिबो that is called as a point coil pitch जोडा कि हमें distance between two coil connected in same commutator segments is known as a front pitch. So winding pitch or resonant pitch का कहजिबो the distance between of two consecutive of a coil side either top or bottom. So two consecutive of the side जोडे कि मु तमु कहली ए पर साइड टू टॉप आउ दीटा coil हे गेला ना एटा coil 1 एटा रहला coil 2 ओके सो ए डाला coil 1 रो ए जोडे कि 1 रे एंडेड coil सो ये गोटे coil हेला ये गोटे coil so आको भीतर जोडा चांस होबो दैट इज कॉल्ड द कोन वाइंडिंग पिच कहजिबो और अदर वर्ड से दैट ऑफ कोन रिजल्टेंट ऑफ पिच ता कोन कहदे रिजल्ट ऑफ पिच से टॉप रहो कि हमर बॉटम रहो ओके टॉप हो कि बॉटम हो सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वाइंडिंग इन द बिकॉज़ इज E1 E2 देछि देखो पिले माने E1 E2 E2 D1 D2 मन रखिथिबो E1 E2 D1 D2 so E1 E2 हमें कहा को कहउछे दिस द shunt excitation of field excitation of winding with a two terminal ये हला E1 E2 हला shunt D1 D2 हला हमर सीरीज A1 A2 हला हमर आर्मेचर मन रखिथिबो ओके so that next question देखिबा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जनरेटर ये कौन जनरेटर ये देते गोटे लोड लगे देछि ये देते कनेक्टर D1 देखो सीरीज कहिथिले मोर सीरीज एटा कोन हेतिबो आके वन होती सीरीज जनरेटर हेतिबो D1 D2 A1 A2 जदि एटा शंट लागि थांता किंबा एटा जदि आउट पैरेलल लागि थांता एटा लागि थांता कोन E1 and E2 बा अदर वर्ड रे SH1 and SH2 कह जाउची बा एटा D सीरीज सेंदी कोन कहउची SC1 and SC2 बट निमी पैटर्न रे ऑलवेज रिमेंबर दैट निमी पैटर्न रे कोन रहउची सीरीज रे रहउची D1 D2 शंट रे रहउची कोन रहउची शंट रे दछि E1 E2 and armature कोन रहउची आर्मेचर रहउची A1 and A2 ओके सो दैट हमें मन रखिया दरकार वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ तो समझ जानि छ IA शंट रे कोन हबो IA ISH plus IL सीरीज रे कोन हबो ना IA plus IL plus ISC सब जांग समान सीरीज रे करंट आर्मेचर करंट फील्ड करंट लोड करंट ऑल आर इन इक्वल ऑलवेज रिमेंबर रखिथो सीरीज रे कोथरे सीरीज रे आ पैरेलल रे कोन हेतबो ना IA सदा बेला ISH plus IL हबो IA केतळ हबो ना तळ फील्ड करंट आ हमर लोड करंट के मिसे देला आर्मेचर करंट से इक्वल हेजो सेमते सेपरेटली एक्साइटेड कोन हबो IA IL ओके सेमते लॉन्ग शंट रे हबो कोन लॉन्ग शंट जहा शंट से या ओके सेपरेटली जहा सीरीज से या ओके आ कोन रहला शॉर्ट शॉर्ट जहा ये भी मद ISH आ ISC आ ये तीनटा जेमदि के आर्मेचर करंट कंपाउंड देछि कंपाउंड आर्मेचर करंट केतळ आसीबो ना शॉर्ट फील्ड रो करंट प्लस हमर सीरीज फील्ड रो करंट मिसी गेला हमर आर्मेचर करंट से इक्वल हे जिवे द पोलैरिटी ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड EMF
इन द डीसी शंट जनरेटर जो डीसी शंट जनरेटर जो हमें डिपेंड्स करूचे कहां पर जो पोलैरिटी कौन पोलैरिटी होची द पोलैरिटी ऑफ द induce of a EMF in a DC shunt generator depend upon कहां पर डिपेंड्स करूची always direction of rotation very important question साधारण मेन पोल और इंटरपोल और मेन पोल में डिफरेंट कोन जानि छ ना इन सेम करंट फ्लो करबो किंतु मेन पोल जदि क्लॉकवाइज बोलिबो इंटरपोल हमर एंटी क्लॉकवाइज बोलिबो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज वेरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन काली हम पढुतिले जो माने काली रो क्लास अटेंड करिनो वीडियो टाको मते देखि अटेंड करनबा देखि दबो मोर कांसेप्ट क्लास दे जाइछि ओके so that the polarity of the induced EMF in a DC shunt generator depend on the direction of rotation कहां पर डिपेंड करबा direction of rotation if either in a one of both reverse polarity change यदि दीटा को हमें reverse polarity दीटा reverse change करेबा if both reverse of polarity remain unchanged यदि कौन सी both of polarity को हमें चेंज करेबा नहीं दीटा मेथड रा हमें चेंजेस कर polarity चेंज हे परबा और रिवर्स न करले चेंज हो परबा नहीं ओके So next question देखिए our problem पड़ची a DC shunt generator has a EMF 100 volt and when it is full of a flux per pole 20 milliampere and the speed is 800 rpm and what is the generator the EG पचासी same peaceful EG कल केता आसीबो हां एटा गोटे क्वेश्चन डा EG पचासी हां ठीक अछि देखिया कोन देछि हां देखा कोन देछि ना डीसी शंट जनरेटर देछि ईएमएफ केते दे देछि ना EG = 100 वोल्ट एंड यूजफुल ऑफ फ्लक्स पर पोल देछि केते फ्लक्स हैला 20 मिलीवेबर एंड स्पीड n = केते देछि n = 800 rpm and what is the generated EMF when the flux pole is 24 मिले से कोन कहछि से पचारछि EG = केते हबो जदि मु फ्लक्स टा को चेंज करे दोछि केते ना 24 मिलीवेबर करूछि at a स्पीड केते ना स्पीड रे मोर रहउछि 100 एम्पीयर मोर स्पीड n भी मोर बढ़ि जाउछि केते 1000 rpm बुझियला सो फास्ट देला गोटे जनरेटर जोडे के 100 वोल्ट इजी फ्लक्स हैला हमर 20 मिलीवेबर एंड स्पीड हैला 800 से कहचे मोर जनरेटर टा केते आसीबो जदि मु फ्लक्स टा को चेंज करे कि 24 मिलीवेबर कर देले और स्पीड टा 100 आरपीएम को चेंज करे सॉरी नॉट इन 100 स्पीड किसी नहीं स्पीड टा हमर दे 1000 आरपीएम थो त तुम इजीली काढी परिबो पिले माने एई सेम जिंस फर्स्ट कंपैरिजन अप करबा E1 by E2 ओके E1 by E2 कंपैरिजन करबा E1 by E2 केते देछि U1 = 5n1 by 5 देखो मु E2 रो सब जंग नेली एको E1 रो सब जंग नेली एको बुझी परछु तो ऊपर नै छि कोन E1 51 n1 तळे नै छि कोन E2 52 and n2 सो ऊपर रे n1 देछि केते n देछि 800 दे दिछि 800 देछि ना क्वेश्चन 800 yes speed देछि n1 800 ओके देन n2 केते देछि ना 1000 देछि फ्लक्स देछि केते हमर 20 ये फ्लक्स देछि केते हमर 24 ओके सो E1 केते दे देछि हमर 100 वोल्ट तो E2 टा केते पचाछि आराम रखी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दबो कोन हेला सेटो 100 दला 80 सो आकु क्रॉस मल्टीप्लाई कर देले हम E2 बाहर जो केते 150 बुझियला So, if the magnetic of a flux produced by the series winding assists the flux produced by the shunt field winding, the DC generator is said to be calm. जति कोन कहछे मैग्नेटिक फ्लक्स जति मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करूची सीरीज वाइंडिंग रे assist the flux of a produced by the shunt field winding दा फले रे कोन को ताको असिस्ट करछे हेल्प करूची कोतरे shunt field winding then the DC generator said कोन ताको कोन का जीवो cumulative compound generator कहजिवो that means series cumulative compound कोन series देखो cumulative compounds और जदि series field रे हमें कोन करूचे ना प्रोड्यूस करूचे फ्लक्स जोडे के फ्लक्स टा
सॉन्ड फील्ड को हम कोन करछे असिस्ट करूछे सेटा को हम क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोले हम कहउछे so what is the if the magnetic flux produced by the series if the magnetic flux produced by any series winding assist माने help of the flux of produced by the shunt field माने series field रो flux रो help साहाय्य रे से shunt field रे flux को produce करूछे in a DC कौन कह cumulative compound कह so cumulative compound generator are used supplying the power of a DC motor so DC motor रे जतले हमें run करोचे the DC motor हमें जानी से electrical energy to mechanical energy so गोटे mechanical source पाइबा पई हमें गोटे electrical source पछरे चलेबा निहाती जरूरी जो जिनसडा चलाए बा जो generator हमें चलाउचे that is a cumulative compound of a generator so that power to DC motor बोली लिखिबा so cumulative compound generator are used how कोठी यूज करे देते हैं लाइटिंग पर्पस मध्ये यूज करे देते हैं पावर सप्लायर मध्ये यूज करे देते हैं एंड फॉर हेवी पावर सर्विसेज मध्ये यूज करते हैं हेवी पावर सर्विसेज मध्ये यूजेस करा जायता है so cumulative compound over compound flat compound under compound and no load voltage जतबेले हमर कांस्टेंट रहिसो जतबेले को वोल्टेज किछि जानथो दैट नो ओवर माने एक्सेसिव वाला compound flatted egg is one flatted that's the no load so the flatted egg रहता flatted compound so that the flat no load रो तळु जतले आसे no load voltage that is our under compound so ए जो characteristic ता और भलो भाबे briefly theory class रे बुझी परिबो ओके so theory class attend करो theory class attend कले और characteristic ता concept clear हे जिवो ओके characteristic रो 100% एग्जाम रे आसीबो हला बी रेडी रुओ मोटर और जनरेटर characteristic ता भल से बुझो so shaft torque less than the armature torque so jodi kon koche the shaft torque is less than the armature torque in a DC series motor that call as kon that is a stray losses jodi konosi karanaro shaft torque is less than the armature torque in a DC series motor gote DC series motor re सीरीज डीसी सीरीज मोटर रे शाफ्ट टॉर्क ता सदा बेले कम थाए जतबेले शाफ्ट टॉर्क कम रहइबो सेतबेले स्पीड ता अधिक होई जिवो जतबेले शाफ्ट टॉर्क अधिक रहइबो सेतबेले स्पीड ता कम रहि जिवो मन रखिथिबो शाफ्ट टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड सो शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन द आर्मेचर ऑफ टॉर्क इन द डीसी सीरीज मोटर ड्यू टू इन स्ट्रे लॉसेस जुगुरु से सदा बेले कोन रहिथिबो जो लेस थिबो कहार लेस थिबो ना आर्मेचर टॉर्क ता सदा बेले शाफ्ट टॉर्क इज लेस शाफ्ट टॉर्क इज लेस कहाटर ना आर्मेचर टॉर्क the shaft torque in a DC series motor is always less than armature torque because the back EMF काहेंगे less थाए the back EMF of motor opposes to the torque of develop in armature जेतले back EMF motor रे opposes करे बा back EMF जामे जानि छी EB motor रे हम कोन छी EB अछि back EMF अछि जहाँ पर से अपोजेस करिवो कोन अपोजेस करे स्पीड को अपोजेस करेबो जतले शाफ्ट अपोजेस करे दैट मीन टॉर्क विल बी डेवलप आर्मेचर जहाँ पर के आर्मेचर रे मध्ये ओटे टॉर्क डेवलप हे जाय सेत पे शाफ्ट टॉर्क सदा बेले आर्मेचर टॉर्क थर कोन तो लेस रे ही थिबो and the speed of the motor is increasing जहाँ पर के मोटर दा increasing हवा स्पीड सो मु तुम कहितले जदे शाफ्ट टॉर्क ता लेस रहइबो ताले कोन हबो स्पीड एटा बढ़ुची बुझि पाइल त क्वेश्चन लॉजिक देखो क्वेश्चन एमिति भी पचारि पारे if the shaft torque is increasing what will be happen the motor speed so motor speed कोन हबो जदि shaft torque increase हबो then motor torque also be decreasing the shaft torque is decreasing the motor speed is increasing then the back EMF also be increasing जदि मोर EB मन रखिथिबो EB आउट कोन रहला EB is increasing हला ना EB is increasing हला आउ कोन हला N is increasing हला then हमर कोन हबो shaft torque होय जबो बा TSS कोन जो TSS is inversely proportional sorry ठीक है पेपर अछि पेपर नै एथरे मु करे दोछि पिले बने देखो इक्वेशन ना मु करे दोछि हला ए इक्वेशन ना मन रखि दबो इजी हे जो तुमको से तुम कोन कहला से देला TSH is inversely proportional to कहा का मदर हला inversely proportional to the हमर back EMF कोन हला back EMF आउ कोन रहला ना स्पीड रहला ओके
बैक ईएमएफ रहला स्पीड रहला आउ कोन रहछ आगु देखिया चलो सो इंक्रीजिंग इन द रिड्यूस इन ए टॉर्क ऑन ए शाफ्ट सो जदि हमें स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीजिंग बैक ऑफ ईएमएफ आल्सो इंक्रीजिंग जा फल करे रिड्यूस ऑफ द टॉर्क कम शाफ्ट टॉर्क ता कमी जीवो एंड द आर्मेचर करंट व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द टॉर्क ऑफ द शाफ्ट इज डिक्रीजिंग जा फल रे कोन हबो the armature current जा फल responsible रहबो and which is responsible for the torque ए कारण and the shaft is decreasing as the speed of the motor is increasing जा फल shaft torque ता कमी गले speed ता हमर बढ़ी जीवो okay and the resultant in a decreasing the torque on the shaft making it less than of the armature जा फल रे की कोन होची resultant हमर कोन हबो ना shaft torque ता सदा बेले armature torque तारु कम हबो कमी जीवो okay इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दा बहुत बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग लागला ए क्वेश्चन दा वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो इक्वेशन ऑलवेज रिमेंबर दैट हमर शाफ्ट टॉर्क जदी बढ़ुची देन बैक ईएमएफ एंड स्पीड आल्सो बी इन डिक्रीजिंग कंडीशन पळे आसीबो ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर सेपरेटली एक्साइटेड ऑफ अ डीसी जनरेटर सो सेपरेटली एक्साइटेड ऑफ अ डीसी जनरेटर कोन ना ए वोल्टेज एक्साइटेड इन करंट एक्साइटेड तो वोल्टेज एक्साइटेड रहइबो current excited भी रहइबो निश्चित भाबे so separately a DC generator is one of a whose field winding is supplied in independent of external of DC source so external DC source देके हमें field winding को energizing करा देता है the magnitude of a generator voltage depend upon the speed of rotation magnitude का ऊपर डिपेंड करबो speed of rotation ऊपर डिपेंड करबो and armature and the field of current ऊपर मतलब डिपेंड करबो so greater the speed and field current so कोन फील्ड करंट एन भी बढ़िबो एंड आई भी बढ़िबो ओके एंड हायर इज द जनरेटिंग वोल्टेज तले इजी कोन हबो इजी मद बढ़िबो मन रखिथिबो केते बेले ग्रेटर द स्पीड बढ़ला करंट बढ़ला इजी भी बढ़िबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कोन नै छी नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कोन दै छी हां एटा इक्वेशन रे देछि सेपरेटली एक्साइटेड केतले जानिबो जे ओटे बैटरी सोर्स तो लागि जाइछि which of the following statement is not in true in armature action ha ei question ora OSPC ro favorite ei question ora OSPC ro favorite which of the following statement is not true kuja armature flux strength is the main flux armature flux or strength the main flux not true kona armature flux ta kon main flux or strength ki no এইটাই নয় ট্রু নয় not true okay so destroying the main field flux along the air gap is called as cross magnetic yes distortion जो आसीबो air gap रे जो distortion आसीबो जो noise आसीबो that is the cross magnetism effect जो cross magnetism lead to spark in the brush yes यदि cross magnetism lead रहइबो बढ़इबो तले कोन हबो sparking हबो net reduction in the main flux called as a demagnetism yes जदि मेन फ्लक्स ता हमर कमी जीवो ताले कोन हो डीमैग्नेटिज्म आर्मेचर फ्लक्स स्ट्रेंथ इज द मेन फ्लक्स एटा नै मेन फ्लक्स कोन होछि जदि कमिला ताले कोन हो डीमैग्नेटिज्म इफेक्ट आल्सो नेट रिड्यूशन द मेन फ्लक्स कॉल्ड एज अ डीमैग्नेटिज्म इफेक्ट जदि मोर मेन फ्लक्स कमी गला ताले मोर डीमैग्नेटिज्म इफेक्ट बोली हमर जानिबा ओके क्वेश्चन ता सदा बुझिबो क्वेश्चन बुझिले जानि परिबो एटा तो कैरेक्टर होरा तारो so demagnetism or weakness the main flux se kon koise armature flux strength the main flux is not a correct for a armature action so the armature flux destroyed and weakened the magnetic flux okay produced by the main pole and this effect armature flux on the main flux is known as armature reaction ei effect ko ame kon koche armature reaction boli koche armature reaction प्रकार दी प्रकार क्रॉस मैग्नेटिज्म इफेक्ट एंड डीमैग्नेटिज्म इफेक्ट डीमैग्नेटिज्म इफेक्ट को अदर वर्ड में कोन को वीकनेस द मेन फ्लक्स बोले हमें कहउछे नेक्स्ट 71 क्वेश्चन देखबा म तुम कहतले 75 पॉइंट डिस्कशन करबी आ चारटा पांचटा क्वेश्चन रहला टिके न को वेट करा चार पांचटा क्वेश्चन कंप्लीट कर दवा ओके तो डीसी जनरेटर शो द एवर इन फिगर कोन डीसी जनरेटर शो करूची देखो एको एतर सीरीज रे कनेक्टेड हेक रहिछि कोन सीरीज रे कनेक्टेड हेक रहिछि ता सहित शंट पैरेलल हेछि सो डायरेक्शन याड अछि सो एटा एपुडो अछि बोले देखा जाउनी ओके ए कंडीशन को हमें कोन कहबा द शॉर्ट डीसी कंपाउंड जनरेटर
जोटा इजीली पळे इजीली the decision generator shown in the above in a short thought केमिति जानिबा shorts and compound generator is in which short field winding is in parallel with the armature winding so short field winding सदा parallel थिबो का सहित armature winding सहित parallel थिबो बुझ पाइला सेटा जानिया जे short compound generator and long shunt compound generator कोन in which short field winding is parallel with both series and field so shunt रे कोन हबो both series and field को दीटा को से parallel थियो केमिति हबो both हो देखो ये हला हमरा series ये हला हमरा armature ये हला हमरा बुझ पाइला ना ये हला हमरा ओके सो एटा कोन देछि लॉन्ग सन कंपाउंड डीसी जनरेटर देछि द हाइट लॉन्ग सन कंपाउंड डीसी जनरेटर हला इट लॉन्ग सन डीसी कंपाउंड जनरेटर इज इन व्हिच शंट फील्ड वाइंडिंग इज इन पैरेलल शंट फील्ड वाइंडिंग कोन अछि पैरेलल अछि विथ बोथ सीरीज एंड फील्ड विथ बोथ सीरीज फील्ड मद पैरेलल रे अछि एंड द आर्मेचर ऑफ द वाइंडिंग्स ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जिवा then when the magnetic reversal are increasing जतले magnetic reversal increasing हबो in a DC generator which losses will be increasing को losses हबो magnetic जदि reverse हसिबो ना अखे बंद करके hysteresis losses लिखिबो because that kh एटा मन रखतो इक्वेशन kh b max 1.6 fb हला बेले बेले f स्क्वायर देथिबो एटा गलत हे जिवो f v सदाळे मन रखियो कोन हेदिबो f v एटा ओपीटीसीएल क्वेश्चन पढथिला सो नेक्स्ट देखिए कोन देछि एथरे द लॉसेस ऑकर इन ए कोर जो कोर हम जो लॉसेस होछि फॉर द आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन ड्यू टू इन मैग्नेटिक ऑफ फील्ड रिवर्सल जो मैग्नेटिक फील्ड में रिवर्सल करछे द आर्मेचर कोर रे when it passes under the successive of a magnetic of a pole of a different polarity is called as a hysteresis losses okay ता कोन कहजो hysteresis of losses बोली कहजो एटा v for volt ने v for volume बोली कहजो so in a DC generator armature lap winding how many parallel path must be there so number of poles तो कहैतला केतरा DC generator equal to the number of pole okay बारंबार क्वेश्चन आछे देखु तो which of the following is not a effect of armature reaction code armature reaction effect में reduce the reduction of the genetic yes effect commutation problem effect shift the magnetic neutralize effect increase the number of pole एटा गलत एटा के पोल बढ़ियो magnetic effect नो एटा ही परिबो नै ओके एटुडा भला डिस्क्रिप्शन देछि देखिबा increasing the number of pole not effect of the armature reaction of a DC so effect of armature reaction कोन the total magnetic flux created by each pole प्रत्येक पोल रे magnetic flux created करोथु each pole and the MNA magnet neutralizes is shifted in the direction of rotation of the armature his shifting of the MNA due to shifting in the axis of the resulting of flux so MNA जो पोजीशन दा shifted करोचे तर को axis रे shifted करबा MNA जुगुरु हमें जो shifted करैबा resultant flux जुगुरु shifted करैबा कहां दे शिफ्ट कर एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स on the हमें mn axis टा चेंजेस करेगा the armature cause of magnetic flux in the neutral zone and the flux neutral zone induced in the voltage in armature which cause in a commutation problem केतला हबा जता armature पर magnetic flux करा हबो neutral zone रे that moment the flux in neutral zone induce a voltage neutral zone और flux टा induce करेबो जो induce टा करेबो सेटा कहा जुगर हबो commutation of covalent जुगर हबो so method of reducing in armature reaction using lamination pole कले भी हबो and punching regulator hole in the field कले भी हबो stronger main field flux as compared in armature flux कले हबो using the compensated winding कले हबो using the interpole of कले भी मध हबो okay then 75 question last question as your classes a 6 pole lap on DC generator has a 800 of a conductor on its of armature the flux per pole is 0.35 Weber and the speed is rotation is armature 15 rpm calculate the easy very simple मु करे आछे एटा तम पे टैक्स एटा तम माने कर देथिबो ओके so last to केते बारे 700 वोल्ट बारे रेडी तो so thank you very much एबा में नेक्स्ट सेशन रे देखिबा आउ बाकी द रेस्ट ऑफ क्वेश्चन thank you